हेलो एवरीवन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ सेट। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने वी हैव डिस्कस डेफिनेशन, टाइप, फॉर्म ऑफ सेट्स। ये सब हमने डिस्कस करा है। आज हमको जो पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसेट। इससे पहले ये दो क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करिएगा इक्वल सेट्स पे। ओके, एंड व्हाट इज सेट ए बिकम हियर? एफ O L and W, because here 2L we have take only one and 2O we have only two. For the definition in we study the distinct in lecture 1. Okay, I understand that this topic is new for all of you. So there is different terminology used, so you have to understand. ये आपके लिए नया है, बट आपको इसकी टर्म्स एंड इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इसको पढ़ने के पीछे एक मोटिवेशन तो यही है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई भी जेई, एनडीए एंड सो ऑन। एंड सेकेंड, टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स और हायर मैथ्स। तो ये दो चीज़ें लेके आपको तो काम करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये तो बात हो गई मोटिवेशन की। अब हमको आज स्टार्ट करना है टॉपिक सबसेट। लेट्स सी, I read these lines and also discuss what is the between the lines. Okay, मैं केवल इसको रीड नहीं करूँगा, मैं आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करूँगा। रीड बिटवीन द लाइन्स so you can understand very well. This is a, I think, new technique of teaching maths online. Let's start. Subset. Consider the set X, set of all students in your school, and Y be the set of all students in your class. Let's take, this is your school, and here are some classes. Okay, this is a school, and I take this is class 11. X is a set of all students in your school. X जो सेट है उसमें सब बच्चे हैं स्कूल के, एंड Y जो सेट है उसमें क्लास 11 के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से हमने नोटिस करा, we note that every element of Y is also an element of X.
मतलब जो स्कूल का बच्चा है वो तो है ही, पर जो क्लास 11th का बच्चा है वो भी उस स्कूल का बच्चा हुआ। तो वी से दैट y इज अ सबसेट ऑफ x। तो हमने कहा y जो है वो x का सबसेट है। अब सबसेट के लिए यहाँ पे हम इंग्लिश में तो सबसेट लिखेंगे, बट मैथमेटिकली इसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं, सी, लाइक सी। y इज अ सबसेट ऑफ x। सब से आप स्मॉल रिलेट कर सकते हैं, स्मॉल सेट, स्मॉल सेट। ओके, सब सेट मतलब स्मॉल, एक्स से थोड़ा सा स्मॉल, स्मॉल ही है। ओके, द फैक्ट दैट y is subset of x is expressed as in symbol like I use. The symbol stand for is subset of or is contained in. Why contained in? You can also say class 11 is contained in your school. So this is also a symbol called contained in. Okay, now see the definition. A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. This is a classic definition. Okay, wait 1 second. Why eraser is not working here? This is a classic definition. A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. Let's decode it. In other words, A is a subset of B if whenever A belongs to set A, then A belongs to B. It is often convenient to use the symbol this, which means implies. Okay, ये कहना चाह रहा है A is a subset of B whenever कोई A से belongs कर रहा है, तो अगर ये है, this is true, then it implies A belongs to B. Okay, I know little bit confusion is here, but I am trying to clear it. Okay, let's go slowly. This definition is on hold. I can explain with examples. Okay, let's read. We read the above statement as A is a subset of B if A is an element of B. Element of A implies that is A is also an element of B. If A is not a subset of B, we write A is this symbol. Okay, अगर A B का सबसेट नहीं है तो हम ये सिंबल को यूज करेंगे, मतलब सबसेट नहीं है. Okay. We may note that for A to be subset of B, all that is needed is that every element of A is in B. It is possible that every element of B may or may not be in A. Okay, let's take one example. A is 1, 2,
3, 4, and B is even prime. So what is set B? Set is 2. So it means 2 is contained in A. So we can write B is a subset of A. Okay, this is the example. अब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे B में हम 2, 3 ये हमने B में कंसीडर कर लिया, इसको भूल जाते हैं 2 and 3. Then also 2, 3 is contained in A. So B is a subset of A. पर जरूरी नहीं है कि 1 और 4 भी B में हो. अगर 1 और 4 भी B में हो गए means every element of B is contained in A and every element of A is contained in B. Then we say that A equal to B. Both sets are equal. So let's read. It is possible that every element of B may or may not be in A. If it so happens that every element of B is also in A, then we shall also have B is a subset of A. In this case, A and B are the same set, so we have A subset of B and B subset of A implies A equal to B, where this symbol is read as if and only if. It follows, this is important, it follows from the above definition that every set A is subset of itself. That is, A is subset of A. Since the empty set phi has no elements, we agree to say that phi is a subset of every set. Okay, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई सेट A है, उसका कोई एलिमेंट मान लेते हैं आर्बिट्री एलिमेंट, जनरल एलिमेंट A. A से बिलोंग कर रहा है और A जो ऑलरेडी A में है means A is subset of itself. Okay, and phi इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ओके, एंड A कोई एक सेट है, तो जनरली हम phi को भी A का सबसेट मानते हैं. क्यों मानते हैं भाई? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी है. और एम्प्टी अगर A का सबसेट होगा, मतलब होता ही है, होगा, तो A को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So we agree to say that phi is a subset of every set. Okay, I can prove this detail in another lecture. Okay,
Let's go on. Let's see some examples. The set Q of rational number is a subset of R of real numbers, and we write Q as a subset of R. Let's see this. This is real line R. Every number is present here. Okay, 1, 2, 1 by 4, root 2. R is a bigger set, or say mother set. So Q is also a subset of R. N is also a subset of R. Z is also a subset of R. And T, set of irrationals, is also a subset of R. ये आपको जानना है. आगे भी एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद से ट्राई करिएगा. ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल. ए को हमने लिया है AEIOU एंड बी को लिया है ABCD. Then A is not a subset of B and B is not a subset of A. Okay? क्योंकि देखिए इसको देखते हैं अच्छे से. A, B, C. Here, what is the definition? Every element of A belongs to B. If A is a subset of B, अगर A B का subset है तो every element of A belongs to B. यहाँ पे AEIOU है, यहाँ पे A तो है बट EIOU नहीं है, तो ये नहीं होगा. ऐसे ही इसमें देखेंगे तो A तो है पर BCD नहीं है, तो ये नहीं होगा. ओके, let A and B be two sets if A is a subset of B and A is not equal to B. Then A is called proper subset of B and B is called superset of A. Okay, अगर A is a subset of B है और A B बराबर नहीं है, जनरली A और B बराबर नहीं होते हैं, तो A को प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहा जाता है. A को प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहते हैं. और B बड़ा है तो हम लोग B को सुपर सेट ऑफ A बोल सकते हैं. आप इस सिंबल को इस सिंबल से भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है. ओके, A equal to 1 to 3 is a proper subset of B. 1, 2, 3, 4. Okay, because here 4 and there is no 4, so A is proper subset of B. If a set A has only one element, we call it singleton set. ये तो मैं आपको बता चुका हूँ. Consider the sets phi, A, B and C. Insert करना है ये symbols को. Phi is a subset of every set. A 1 3 is here. Here 1 5 9. So only 1 is there, not 3. A 1 3. 1 3 is here. So this is a subset. 1 5 9. 1 is here. 5 is here. 9 is here. So
This is a very simple concept, but you have to understand it. This is this example we have discussed already. A is a subset of B? No. Is B a subset of A? No. Y is also I discussed. Okay, let's see this example. If A, B, and C three sets, if A belongs to B, A set belongs to B, and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give an example. So the answer is no. Let A is equal to one set and B is equal to what they take. A is this and B is like this, and C is this. 1, 2, 3. Here A belongs to B and B is a subset of C, but A is not a subset of C. Why? Because here A has 1 as an element, and here in C this 1 is not element, this is set. Okay, so A is not a subset of C. अब एक सेट के अंदर कई सेट्स रख सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी रख सकते हैं, कुछ भी. दिस इज अ कलेक्शन. ओके, दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग इन दैट एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो वन है वो एक एलिमेंट की तरह के बिहेव करेगा, बट यहाँ पे जो वन है वो एक सेट की तरीके. ठीक है, इसीलिए इसने ए बिलोंग्स टू बी कहा. ए मतलब होल ए, नॉट ओनली वन. Okay, I think you understand. If you not, please comment on what is not understanding by you. Okay, let's see some OG subsets of R. As noted in section this, you can refer the section. There are many important subsets of R. We give below the names of some of these subsets. The set of natural numbers is a subset of R. The set of integer is a subset of R. The set of rational x such that x is p by q, pq belongs to z and q is not equal to 0. This is the definition of rational number is a subset of R, which is read q set of all number x such that x equal to quotient, and this is a definition they give for a rational. The set of irrational number denoted by T is composed of all other real number. Thus, x belongs to R such that irrational set को हम कैसे लिखते हैं? X such that x belongs to R and x doesn't belongs to rational. जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, like √2, √5, √5, pi. You have studied in class 10.
Now, this one. N is a subset of Z is a subset of Q. N. What is N? 1, 2, 3, 4, so on. What is Z? Minus A plus तक के सारे इंटीजर. What is Q? X such that X is equal to P by Q, where P Q belongs to Z and Q is not equal to 0. This means, so this is smaller, this is much bigger, this is much bigger. So that means N is a subset of Z is a subset of Q. Similarly, Q is a subset of R and T. Irrationals are is also a subset of R and N is not a subset of irrational. You can check it because here is no root 2, root 3. So this is simple. No interval as subset of R. इसको भी आज ही देख लेते हैं नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. आई होप इनइक्वालिटीज आप लोगों को आती होगी. दिस इज अ नंबर लाइन. ओके, if we say here is A and here is B and I am saying X, some X between A and B. Let A B belongs to R and A is less than B. Obvious, always this holds. A is less than B. Then the set of real numbers Y such that is called an open interval. एंड हम इसको कैसे डिनोट करते हैं ऐसे. ओके, इक्वालिटी आ गई है तो अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे. क्लोज एंड वन साइड open, another side closed. One side open, another side closed. These are four types of interval. This is called open interval. In this, A and B are not included. This is closed means A and B are included. Here A is not included but B is included. And here A is included but B is not included. This is all subsets of R and known as interval. And the set R, you can read that text is important. Let's read. These notation provide an alternative way of designating the subsets of set of real numbers. For example, if A is equal to open minus 3 to 5 open and B is minus 7 to 9. Let's see. A is minus
3 to 5. Open. And B is -7 to 9. Clearly, this is contained in -7 to 9, so we can write this. This is the set 0 to infinity defines the set of non-negative real numbers. Okay, because in this set all reals are positive, while minus infinity 0 defines the set of negative real numbers. This is set R, real line. Okay, you can relate it and read it. And the important thing, the number b minus a is called the length of any of interval like this. इन सब की जो लेंथ आएगी वो b माइनस ए ही आएगी, सबकी, चारों की। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक यूनिवर्सल सेट। बेसिकली यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ consideration. Let's read it. Usually, in a particular context, we have to deal with the elements and subsets of a basic set which is relevant to that particular context. For example, while studying the system of numbers, we are interested in set of natural numbers and its subsets such as the set of all prime numbers, even numbers, and so forth. This basic set is called the universal set. Okay, मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है वो एक सिस्टम ऑफ, मतलब एक कंसिडरेशन सेट है। अब अगर हम किसी नंबर सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सल नेचुरल को ले लेंगे। अगर हम रियल लाइन पे बात कर रहे हैं तो आर को ले लेंगे। और जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, कोई सेट है उसमें ये आ सकता है। जैसे अब हमें परसेंटेज की बात करनी है, डेटा हमारा अगर परसेंटेज में है तो वो 100% तक ही जा सकता है। वैसे ही हमें एक यूनिवर्सल सेट देता है कंसिडरेशन सेट, कि हम इस एरिया में ही बात करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ओके, for example, for the set of all integer, the universal set can be the set of rational numbers, or for that matter the set R of real numbers। जैसे हमें इंटीजर्स पे बात करनी है तो इसका जो सुपर सेट होता है वो क्या होता है, क्यू। क्यू का भी सुपर सेट क्या होता है, आर। तो अब हमको कंसीडर करना है कि हम क्यू पे बात कर रहे हैं कि आर पे बात कर रहे हैं, तो यही हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, this is simple. I hope you understand. This is exercise 1.3. I can do all exercise when I completed this chapter. Okay, उससे पहले आप ये सब ट्राई कर सकते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। Now next topic is Venn diagram. This will be done tomorrow. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.